that Sonia Gandhi stepped down from Rai Bureli undefeated and completely on her own terms. Frail health forcing her to seek the less demanding confines of the Rajya Sabha. तुम्हें गर्व है कि जिसने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया हो वो एक महान नेता और कि वो किसी राज्य में जाके बन सकती थी राज्यसभा मेंबर, उन्होंने चयन किया अगर राजस्थान का, तो आप सोच सकते हो कि हम सबके लिए कितने बड़े गर्व की बात है। भारत सरकार एनडीए गवर्नमेंट आज बनी हुई है, उनके भी कान खड़े होंगे। सोनिया गांधी जी का रिश्ता एज ए राज्यसभा मेंबर राजस्थान से हैं। In an emotional letter to the people of Rai Bureli, Sonia Gandhi promised to come back to the place which made her what she is today. But after decades of Gandhi family rule, could it be that it was also the fear of a direct loss that compelled Sonia to leave while she was still in control? In Rai Bureli now, there's a void of uncertainty. If not Sonia, then who? मुझे ये कहने की जरूरत तो नहीं है कि मेरे परिवार ने कितना इस क्षेत्र के लिए किया है। मैं जानती हूँ, इसलिए मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी माँ के दिल में आप लोगों के लिए एक खास जगह है। वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। अगर हम ये चुनाव जीते हैं तो ये सच है कि इस रिश्ते के नाते जीते हैं जो मेरे परिवार और आपके बीच है। पहले इमोशनल बयान, फिर नरेंद्र मोदी से सीधे सवाल और अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर तीखा हमला। 2014 के लिहाज से कांग्रेस के लिए सियासी ऊबड़ खाबड़ कही जा रही सड़क पर प्रियंका गांधी रफ्तार बढ़ाने के लिए लगातार गियर बदल रही हैं। The question for the Congress here in Rai Bureli is that with Sonia Gandhi going via the Rajya Sabha route, who will take her space? Who will take the baton from her? क्या मूड बन रहा है Rai Bureli में? साल के 365 दिन, हफ्ते के 7 दिन यहाँ पर कांग्रेस का ही मूड रहता है। कांग्रेस ने यहाँ पे काम किया है, बहुत काम किया है। रायबरेली में एम्स दिया, आईटीआई दिया, रेल कोच कारखाना दिया, पहिया कारखाना दिया, एफडीडीआई दिया, फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज दिया, सब कुछ रायबरेली में कांग्रेस ने दिया, सोनिया जी ने दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा अगर लड़ेंगी तो कुछ मिजाज बनेगा? निश्चित ही जीत प्रियंका वाड्रा की ही होगी। पिछले 4 साल पहले जब कोविड आया था, किसी भी गांधी परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ पे नहीं आया। आज लोकसभा चुनाव है तो राहुल गांधी जी यहाँ पे आए हैं। आज राहुल गांधी जी लोकसभा चुनाव अगर ना होता तो राहुल गांधी जी यहाँ पे ना थे। इस बार अमेठी 2019 में कमल खिला था, 2024 में रायबरेली में भी कमल खिलेगा और रायबरेली की सीट गांधी परिवार हारेगी। इस बार कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी यहाँ से आएगा, हम लोग उसको उसी तरह भगाएंगे जैसे अमेठी की ने राहुल गांधी जी को भगाया था। रायबरेली शासनी से सबसे पिछड़ा क्षेत्र था इनका। इतने दिनों से यहाँ की प्रधानमंत्री भी रह चुकी इंदिरा गांधी, तब से अब तक कुछ नहीं हुआ और उम्मीद भी नहीं की जाती आने वाले समय में। बीजेपी रायबरेली का विकास नहीं विनाश करने के लिए आएगी अगर बीजेपी आएगी तो। इसलिए हम सभी भाइयों साथियों का मानना है कांग्रेस यहाँ के लिए बेटर है और सर्वोत्तम है। If I were to look for a relatively safe seat for the Congress, it would be Raebareli. Therefore, you would expect Priyanka Gandhi to choose Raebareli if she is to make her political debut. But the BJP, even in Raebareli, intends to make extra effort to try and defeat whoever is the Congress candidate, whether it's a Gandhi family member or a non-Gandhi family member. Remember in assembly elections in UP last time, it's the BJP which dominated Amethi Raebareli. So Raebareli too can no longer be called a safe seat for the Congress. Que sera, sera. Whatever will be, as the famous song goes. But Rai Bureli isn't the only bastion of suspense. There's a question mark over Amethi as well. The seat may have been handsomely won by BJP Smriti Irani in her second attempt in 2019. But a clamour has once again kicked off within the Congress for Rahul Gandhi to at least attempt a mission Ghar Wapsi in Amethi. So the high point or the climax of the Bharat Jodo Nyay Yatra, where Rahul Gandhi, who lost Amethi in 2019, is back
in what was once the traditional bastion of the Gandhi family. It was a rumbling homecoming of sorts. A king, if you will, who was vanquished from his own kingdom, returning on a yatra after 5 years. लेंगे बदला देंगे खून भैया बिना अमेठी सून क्योंकि अमेठी की शान अमेठी जान किसानों का मसीहा. The message was unmistakable and yet filled with that traditional Congress intrigue. पूर्व सांसद राहुल गांधी का स्वागत करेंगे और दिल से करेंगे और प्रियंका जी मेरी आ रही हैं वो उनको देने के लिए मैं उनसे कहेंगे कि आप पुनः अमेठी से चुनाव लड़िए, चुनाव में आइए, हम लोग जिता करके 5 लाख वोट से अपनी जिता करके सांसद भेजेंगे. Rahul hasn't really been a familiar sight in Amethi since 2019, since his defeat. But he has been the Member of Parliament for this constituency for 15 years. That's 3 terms. And so for the locals, today, there's a sense of deja vu. A hark back there to a young Rahul Gandhi taking forward his family legacy from his uncle Sanjay Gandhi from 1980 in Amethi. लेकिन इमरजेंसी ने सत्ता की ताकत ऐसे आदमी के हाथों में पहुंचा दी जिसे गैर जिम्मेदार, घमंडी और बदले की भावना से भरे व्यक्ति के रूप में देखा जाता था. Many here remember the churn of that time. After emergency was lifted in 1977, fresh elections were called. Indira chose to fight from Rai Bureli, where she already had a secure base, and her younger son Sanjay opted for Amethi. मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस का गढ़ था अमेठी. कांग्रेस विचारधारा थी. लोगों ने आग्रह किया, अनुरोध किया कि माँ बेटे अगल बगल से लड़ें, तो दोनों ने रायबरेली वो लड़ नहीं थी तो संजय जी ने अमेठी से पर्चा किया. तो कुल मिला के अगर आप देखें तो एक पारिवारिक रिश्ता है दोनों में. दोनों को अलग करके देखा ही नहीं जा सकता. There was a wave of sympathy, a wave of support for Indira, which brought the Gandhis back to both seats, and that too with a resounding margin. Things took a tragic turn just months later when Sanjay Gandhi died in an airplane crash in Delhi. A grieving Amethi rewarded the Gandhi family again, this time with Sanjay's older brother Rajiv. It was Rajiv's forced entry essentially into politics in the wake of an unprecedented family tragedy. The airline pilot had to fold away his wings and get right down to business, taking forward his family legacy. Amethi stood loyal to the Gandhis, with Rajiv being elected in 1984 and then re-elected in 1989. But in 1991 came another abrupt and tragic upheaval, with Rajiv Gandhi's assassination just before the election. Amethi had lost their crown prince, but if anything, it essentially galvanized the constituency in its loyalty to the family. You had Rajiv's close aide, Captain Satish Sharma, taking over and representing Amethi till 1998. It's often said that nothing can be taken for granted in politics. Not bastions, not legacies, not strongholds. This would come true in 1998, when the Congress faced the brunt quite simply for complacency, as Amethi was lost to the Vajpayee wave that swept Uttar Pradesh. But again, not for long. कैप्टन साहब चुनाव लड़ रहे थे. सिटिंग एमपी वही थे. राजीव जी के बाद उन्हीं को बनाया गया था. शायद उस जनता की अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे, और जैसे ही सोनिया जी आई, हर घर में दिवाली मनाई गई, ईद मनाई गई, और लोगों ने हाथों हाथ उनको ले लिया. लाखों से जिता दिया. You know, Sonia Gandhi's entry into politics, first she contested from Bellary.
if you will recall, in South India and Karnataka. She wins that seat against Sushma Swaraj. But I think Sonia Gandhi was intelligent enough to realize that if she had to establish family control or her dominance over the Congress, she needed to win in North India and Amethi in particular. It would then signal that the baton had been passed in a way from Rajiv Gandhi, her late husband, to her, which is why I think she chose to contest that 1999 election. After only a few months, Amethi welcomed back a Gandhi family member with open arms. And just to understand the magnitude of that victory, Sonia managed over 4 lakh votes out of the 6 lakh that voted in Amethi that year. And it was during this term, this was between 1999 to 2004, that a young and reclusive Rahul Gandhi emerged in public and appeared for campaigns in the shadow of his mother. The question was not if, but when. You have to feel it. If you want to do it at the right time, you do it. I don't think pressure is really an issue. You can't really be pressurized. But clearly you are not the type who is averse to politics. Is that true? I'm not averse to politics, but that doesn't mean I'm going to join politics. क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी आप लोगों पर वही दबाव रहेगा कि राहुल को बड़ा संभाल के रखना होगा, राहुल पर भी सारी की चीजें हो सकती हैं, डर नहीं लगता है सब सोच के? जी डर तो नहीं लगता, डर नहीं लगता, बिल्कुल कहीं मन में कोई कर्तव्य है, धर्म रहा है परिवार का।